Good morning, student. Good afternoon, students. Today we will discuss question answers. I will make you understand the question answers so that learning will be easy for you. And bookwork I will ask from you. Shubneet. I think I have observed you, Shubneet, first time in the class. I send you message on your WhatsApp contact also, but no response is there. Good afternoon. Jashandeep Singh, good afternoon. Now you will take with you book on page number 183. Okay. You will take book at page number 183 and pencil also. ध्रुव ढिल्लो, you haven't respond me. मैंने आपको कॉल किया था ध्रुव ढिल्लो, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. प्रिंस जांगड़ा, जसलीन, अर्शनु, गुरकीरत, खुशबू, अभिजीत, सिमरन. Another Simran is not there now. Only one Simran is responding. Navtej, father name. Damanpreet. Aman, okay. Arman Singh. Section D. You are taking a lot of time to join. So, you will start giving me answers, okay, in the comment box. आपने फटाफट आंसर्स देने हैं. सो वी विल डिस्कस इन दिस वे. ठीक है, साथ साथ समझाते जाती हूँ, साथ साथ में आपकी क्वेरी हो जाएगी. जीवांशी, हाउ आर यू? जशनदीप 8C एक बार अटेंडेंस हो चुकी है बेटा, बार बार नहीं लिखना है, आपने गूगल फॉर्म में भरना है. युवराज, यू आर इन 7th क्लास ना? युवराज दयाल, आपका क्या नाम है भाई यहाँ पे युवराज दयाल का? इन दिस क्लास बिकॉज यू आर इन द 7th क्लास ऑल्सो ना? किरणदीप कौर, ओके. वीरपाल कौर, न्यू एडमिटेड. हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? नाउ चेक योर नॉलेज. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू and false. On first question, the sperm and the ovum fuse to form an embryo. Is that true or false? Sperm and the ovum fuse to form an embryo. Is that true or false? You will send me in the answer. True. Dipanshu, your answer is true. Jasveer Singh, true. Jasleen Randhawa, true. बेटे sperm and ovum fuse to form zygote. Sperm and ovum fuse to form zygote. ठीक है, so this is a false. अपने पेंसिल से इसको false कर देना है. Sperm and ovum fuse, then zygote will form. Embryo cut करोगे and answer will be zygote. This is the false. Embryo cut, right zygote. Now in human, second, first question का second part. In humans, fertilization occurs in an ovary. Humans में fertilization occurs in ovary. फटाफट बताइए. Fertilization it occurs in ovary. Ovary का काम क्या? Fertilization कहाँ पे होता है? Where will be the fertilization? False है. Correction क्या करेंगे? B का आंसर false. In human fertilization occurs in ovary. False. अब ovary की जगह क्या लिखोगे? Where the fertilization will be there? fertilization कहाँ पे होगा? फटाफट बताइए. Yes, that will be in the fallopian tube. सेकेंड का आंसर देखो, फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड भी फॉल्स है. फर्स्ट में एम्ब्रो कट करके आपने लिखना है जायगॉट. सेकेंड में ओवरी कट करके आपने लिखनी है फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. सो इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशंस ऑकर इन द
ovary, not ovary, false है ये, fallopian tube. Third, oviparous animals give birth to the babies. तरह के होते हैं oviparous and viviparous. तो oviparous gives babies और viviparous gives babies. Viviparous, false है ये, viviparous gives. Third question, C part, oviparous animals gives birth to baby. No, viviparous gives birth to the young ones. एंड देखो एग से आपने याद रख लेना है, एग से ओविपोरस, एग से आपने याद रख लेना है ओविपोरस. तो विविपोरस क्या है, इट विल जस्ट गिव्स यंग वंस. ठीक है, तो ओविपोरस लेज एग, आपने करेक्शन कर देना है, ओविपोरस एनिमल्स लेज एग, या फिर आपने करना है ओविपोरस को कट करके विविपोरस. विविपोरस एनिमल्स गिव्स बर्थ टू द बेबी. ठीक है, एक मिनट. इसके बाद क्या है, डी पार्ट, एन एम्ब्रो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. अब आपने आंसर देना है. एम्ब्रो, एम्ब्रो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. वतनप्रीत सिंह, फॉल्स है, लेकिन अब एम्ब्रो किससे बना होता है, हाउ मैनी सेल्स आर देयर, मैनी सेल्स. ठीक है, तो एम्ब्रो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, फॉल्स, बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स वी कैन से. ओके, मल्टीपल सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स. ह्यूमन फीमेल्स प्रोड्यूसेस अ सिंगल ओवम एट अ टाइम. ये आपने बताना है कि ह्यूमन फीमेल्स produces a single ovum at a time or many. Human females produces a single ovum at a time or many. Jashandeep Singh, there will be only single ovum at a time. Very less strands are there, 33 strands only. Why other are not here? Single cell. Human females produces a single ovum or ova in a month at a one time. Okay, so again repeating, first false, correction embryo की जगह क्या आ जाएगा, zygote. Second false, correction ovary की जगह क्या आ जाएगा, fallopian tube. Third, oviporous cut and write viviporous. Fourth, embryo is made up of a single cell. No, multiple cells or group of cells. Human females produce a single ovum at a time. Yes, true. Okay, now give one words. The process of fusion of the sperms and the ovum, fusion of sperm and ovum is known as a fertilization. Very good, Tamanna Jindal, you are very fast. So answer is fertilization. तो आपने लिख देना है इसको, fertilization. Second, thread-like structure inside the nucleus of a cell, chromosomes. Second is chromosomes. First आप लिखोगे fertilization, वतनप्रीत सिंह, chromosomes. Very good, वतनप्रीत, you are performing well. Yes, chromosomes, correct answer. Second is chromosomes. Third, technique used for killing the girl's fetus. टेक्निक यूज टू किलिंग फीमेल फिटस, इसको हम क्या कहते हैं, अबॉर्शन. वेरी गुड, आंसर इज अबॉर्शन. यस, वेरी गुड आंसर. नाउ फर्स्ट अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट तो क्या है आपका, फर्टिलाइजेशन. सेकेंड है क्रोमोसोम्स और थर्ड है आपका अबॉर्शन. उसके बाद है फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन.
reproductive cell. फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, तो वो क्या है आपका? रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी है? मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव तो क्या है? स्पर्म, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवम और एग। वेरी गुड, ओवम एंड एग, शाबाश। So again you check it. First, the process of fusion of the sperm and the ovum, fertilization. Second, thread-like structure inside the nucleus, chromosomes. Third, technique used for killing the girl's fetus, abortion. Fourth, fertilization occurs inside the body, internal fertilization. And female reproductive cell is ovum. Good. Now match the column. अब आपने मैच करना है स्पर्म्स, तो स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द मेल, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द मेल, सो मार्क विद द मेल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होगा? वेरी गुड तमन्ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विल बी इन द फ्रॉग, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विल बी इन द फ्रॉग। देन ओवरी, ओवरी अब हमारे पास क्या है? एग, दैट इज रिलीजिंग एग ना, ओवरी रिलीजेस एग। वेरी गुड। देन asexual, asexual reproduction is binary fission. Very good. And cow, cow is viviparous. Very good. Again repeating, sperm with the male, external fertilization with the external fertilization will be in the frog, ovary, egg, asexual, binary, cow, viviparous. So in this way match the following over. Now give the examples. अब अपने फटाफट एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ओविपोरस एनिमल्स, ओविपोरस एनिमल्स एग्जाम्पल और विविपोरस के एग्जाम्पल्स फटाफट आप लिखिए। दोनों के एग्जाम्पल्स एक ही कमेंट में दोनों के आंसर्स लिख के दे दो मेरे को। इन सिंगल कमेंट ओनली गिव मी आंसर्स। अभिजीत, जोबन, केविन, हर्ष, the students are not there today. Arshnoor, Amanat, Sarabjit, Nikunj, Rotansh, Bhavishya, Mankirat, Gurkirat है, Mankirat is not there. Muskan, Janvi, these students are not here na? Muskan, Janvi, so I have to call these students whose name are not here, और अटेंडेंस में भी गूगल फॉर्म में भी अटेंडेंस नहीं लगेगी। कल राजदीप, केविन, 5-6 बच्चों ने गलत अटेंडेंस भेज रखी थी। अर्शनूर ओके, ऐशनूर ऑल्सो देयर, ऐशमन ऑल्सो नॉट देयर, अर्शनूर को दैट इज गुड, यू आर हेयर। Arshdeep, yesterday I have called to Arshdeep also. Manjinder, whose name I am speaking now, that only give me response, others not. Okay. Now, oviparous animals, oviparous, which are giving egg. Arshdeep, sing. Okay. Oviparous animals. Veer Gurinder is there. Veer Gurinder. Sahib Noor, Muskan, Anvi,
Now student strength increased after speaking my name. I have spoken the names now. Arman, 2 3 Armans are there. Harsh, Itzi, Veer Gurinder, you are here. Okay. Janvi is not there. Manat Gill, Manat Singla is not there. है ना, Manat Gill, Manat Singla. Jivanshi, you are here. Okay. Janvi is not there. All should be present in the class. Say it after the class. Say to your friends who they are not there. I have to call them. अब I give 2 example. देखो, oviparous animals are that animals which will lay eggs like lizards, snake, okay, birds, fishes. They all are oviparous. And viviparous animals are the mammals who produces young ones. Okay. So viviparous animals who produces young ones. तो mammals कह सकते हैं, human beings, buffalo, cow, that you can give example. ठीक है. Now difference between the 5 points दे रखे हैं. Difference between the asexual and sexual. इंटरनल एक्सटर्नल मैं समझा देती हूँ. ओविपोरस, विविपोरस, स्पर्म, एग, जायगोट एंड फिटस. ठीक है. समझाने के बाद आपने आज इसकी लर्निंग करनी है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आपका? सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट ऑकर, ओनली सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड एंड द जेनेटिकल आइडेंटिटी इज देयर. आइडेंटिकल यानी एक जैसा, जेनेटिकल मीन्स बाय जीन्स. Sexual reproduction, it is complex mode of reproduction. It occurs in the mammals mostly. Mode of reproduction needs well-defined reproductive system. 2 parents are required. Genetical identical is not there. Resembling. Babies resemble but not identical genetically. ये एग्जाम्पल, ये आपके डिफरेंसेस हो गए सेक्सुअल और सेक्सुअल में. फिर एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है? तन्मय, यू हैव ज्वाइन नाउ बेटा. एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड. मोस्टली इट इज हैपनिंग इन द वाटर बॉडीज, नॉट इन द बॉडी. इन द फीमेल बॉडी नहीं होगा, तो क्या है? एक्सटर्नल है ये. And it is happening in the egg laying. External fertilization occurs in the egg laying animals, mostly aquatic animals which present in the water bodies. Internal fertilization take place in the human body. 2 क्लास कौन कौन से? कौन से सब +1 में? +1 आर्ट्स है. अच्छा. और +2 है वो कौन? कॉमर्स. अच्छा, फिर गुरविंदर सर को बोल तो वो ले लेंगे क्लास. गुरविंदर सर को अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चे. कौन लेके गया? साथ में +2 को भी ले जाए, प्रैक्टिस कर. सर सुनो, गुरविंदर सर +1 +2 कॉमर्स देख लेंगे, और संदीप जो अपने इंग्लिश वाले संदीप सर है ना, गौतम, उनको बोलो वो आ जाएंगे आर्ट्स में, वो करवा लेंगे अपनी लर्निंग. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली हैपनिंग इन द मैमल्स, एंड दे प्रोड्यूसेस यंग वंस. तन्मय बेटा, you must complete notebooks, you must be present, you must be regular and punctual. Palak 8th D, now you have joined. Now C part, oviporous and viviporous. Oviporous animals which lays egg. इसमें आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन डाल, एक्सटर्नल इंटरनल का मैटर डाल सकते हो. Oviporous animals which lays egg, and oviporous animals, in these animals external fertilization will be there. Examples हैं आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, ये सारे क्या हैं? ओविपोरस के एग्जाम्पल हैं.
Viviparous animals which produce young ones which resembles to the parents. Viviparous animals, in viviparous animals, internal fertilization will be there. In the viviparous animals examples, human beings or animals we can take. D है आपका sperm and egg. Sperm और egg में क्या है देखो, sperm it is male reproductive cell और egg it is female reproductive cell. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एग है. Sperms releases from the male reproductive system in the number of count. ठीक है, but egg releases from the female reproductive system once in a month. Once in a month, and sperm at a time many will be there. Okay, when fusion of sperms and egg will be there, then fertilization will be there and zygote will form. तो ये आपने लिखना है जायगॉट और सॉरी स्पर्म एंड एग का. क्लियर. फिर है आपका जायगॉट एंड फिटस. जायगॉट इज अ सिंगल सेल. आफ्टर द जायगॉट देयर विल बी ग्रुप्स ऑफ सेल, ऑर्गन, टिश्यूज विल बी फॉर्म. तो जायगॉट विल फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल reproductive cells, or we can say when fusion of male and female reproductive cells will be there, then there will be formation of zygote. Single cell है, ये ध्यान रखना, it is a single cell. और fetus, fetus is we can say it is a group of cells, and in the fetus body parts are able to identified. And baby, we can say baby before the birth, which can be identified by the body parts, that is known as a fetus. Clear this thing. So fetus has multiple cell, organs, hands, legs, all parts we can identify, that is fetus. Zygote, after the fertilization zygote will be formed, single cell will be there. Okay, सो इन दिस वे डिफरेंसेस हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं. उसके बाद है एक्सप्लेन एन अमीबा एंड हाइड्रा मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो आपने इन दोनों के डायग्राम बनाने हैं, अमीबा का बाइनरी फ्यूजन और हाइड्रा का आपका बडिंग. ठीक है ना. तो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द बडिंग. सो इन द अमीबा न्यूक्लियस विल बी डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स and then body also separate. So from the mother amoeba, two daughter amoeba we will get, and in the hydra budding will be there. First bud will be formed and bud will mature and then it will deattach. So this will be that formation or asexual mode of reproduction in the hydra and the amoeba. फिर the sex of a baby depends only on the father. Justified. Yes, you give me answers how it is justified. कल हमने किया था ना, कल की क्लास में हमने की थी the sex of a baby depends on the father. How you can say this thing? Very fast, give me answer. साहिब नूर, गुरकीरत, युवराज सिंह, खुशप्रीत, तमन्ना, ध्रुव. Now give me answers. सिमरन, किरण, अर्शनूर. How the sex of a baby depends on the father. Arman, Simran, Dipanshu, Jivanshi, Khushi, Muskan, Mannat, Kiran, Vatan. Very fast, give me answer. Because of, we will say because the last pair of chromosome has different in the both male and female. ठीक है. Because Y chromosomes, which is responsible for the birth of boy, Y chromosomes, which is responsible for the birth of boy, is present only in the sperm cell, and that is released by the father. So we can say Y chromosomes is present only in the father,
So father is responsible only for the birth of a boy baby. Clear? Yes, very good. Other also send me answer. Yani X and Y, that pair is present in the father sperms. ठीक है? सुमित काजल, very good. Manatpreet, your answer. तन्मय, योर आंसर. मनतप्रीत, योर आंसर. हाँ जी. अब है एक्सप्लेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल. आप मुझे बताइए, कल हमने किया था एक्सप्लेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इज देयर नीड टू एक्सप्लेन अगेन? देन आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि ये हमने रिसेंटली किया है. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सप्लेन करने हैं आपको, तो मैं दोबारा कर देती हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं. सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स. नो नीड. खुशी? ओके, वेरी गुड. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Explain in details the main stages of fertilization in human beings. What are the main stages of the fertilization? तो सबसे पहला स्टेज क्या है? Release of ovum and sperm, then fusion of male and female, then there will be fertilization. Fusion of male and female, zygote will be there. ठीक है? After the, देखो, male and female, when it will be fused, then there will be fertilization. तो explain the detail main stages of the fertilization. तो fertilization के stages तो आपके यही होंगे. This is on page number 176. So how the egg will release and how the sperm will release, then there will be fusion, and after fusion there will be zygote formation. We can say fertilization. Fertilization के बाद क्या होगा? Zygote, and after the zygote there will be many cells, and then cells will divide, and there will be multiple cells, organs will be formed, and then more organ system will be there. तो ये आपका क्या होगा? स्टेजेस हैं. फिर डिस्कस जायगॉट डेवलप इनटू द बेबी. ये हमने कल किया था. डिस्कस हाउ अ जायगॉट डेवलप इन द बेबी इन ह्यूमन. इज देयर नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग? एंड ड्रॉ द चार्ट शोइंग द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये दोनों टॉपिक्स फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नीड्स टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये हमने रिसेंटली किए थे. अदरवाइज फिर मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 और 11. सुमित काजल, इसका मतलब आपको अच्छी तरह से आता है. नो नीड. वेरी गुड, समझ में आ गया. फिर अब आपने लर्निंग करनी है इसकी. ओके, वेरी गुड. वन टाइम ओनली सुमित काजल, सेंड मी आंसर ओनली वन टाइम. ठीक है, थिंक एंड अप्लाई पे आ जाइए. थिंक एंड अप्लाई. Which of the following is true about asexual reproduction? Gurleen Kaur. Which of the following is true about the asexual reproduction? It involves fusion of gametes, special cells are required, fertilization in internal, only one parent is involved. So what will be answer? What will be answer? It required only one parents. वेरी गुड जीवांशी. सो टिक द करेक्ट में आपका आंसर क्या आएगा? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? वास डिफरेंस इज देयर, टेस्टिस इज देयर, फैलोपियन ट्यूब एंड पेनिस. पेनिस इज देयर बट फैलोपियन ट्यूब इज नॉट देयर. वेरी गुड. अब यहाँ पे क्या नहीं है? फैलोपियन ट्यूब. सो सेकेंड का आंसर क्या है? फैलोपियन ट्यूब. फिर थर्ड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स. देखो किस किस में है? फ्रॉग नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है फ्रॉग में. शार्क, फिश है यहाँ पे.
और सी स्टार, ये भी आपका एक तरह से एक्वेटिक एनिमल है। और उसके बाद है क्रब्स। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, एक ने शार्क बोल दिया, एक ने सी स्टार बोल दिया, एक ने क्रब बोल दिया, और एक आप फ्रॉग बोल दीजिए। फिर अपना आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? 3 आंसर आ गए मेरे पास, शार्क, क्रब, सी स्टार। सो मैं कौन सा आंसर लगाऊं? शार्क, शार्क, मेक इट शॉर्ट। फ्रॉग, सी स्टार, सी स्टार का आंसर आ गया। अब फिर क्रैब का आंसर आ गया। मेक इट शॉर्ट तमन्ना, व्हाट विल बी द आंसर? शार्क इज आंसर। गुरविंदर कौर, उससे पहले तो तुम थी नहीं यहाँ पे क्लास में, यू आर लेट। So what will be answer? Answer is shark. The number of nuclei present in a zygote is, nuclei present in a zygote is, number of nuclei present in the zygote. 2 न्यूक्लियस होंगे जायगोट में। जीरो, 1, 2 और 4। Sure, the zygote has 2 nuclei. भाई जायगोट में 2 न्यूक्लियस कैसे होंगे? ये तो सिंगल सेल है, फिर हाउ मेनी न्यूक्लियस विल बी देयर? Okay, if you are saying 2, then it will be 2 nucleus will be there. फिर नेक्स्ट है देखो, which of the following is formed after fertilization? Which of the following is formed after fertilization? Zygote, very good. Zygote will form, very good. So first answer, think and apply. First answer, only 1 parents involved. Second, fallopian tube. Third, shark. Fourth, 2. Fifth आपका zygote. ठीक है। अब think and answer the following questions. Why does amoeba not reproduce sexually? Because it do not have well-defined reproductive system. Amoeba do not have reproductive organs, reproductive system, and it is only a single cell. And single cellular organism performs it all vital activities with the help of a single cell only. ठीक है ना? तो single cell organisms single cell से ही सारे काम करती हैं. So it do not have reproductive organs, reproductive cells, ठीक है, reproductive system. That's why it will reproduce asexually. When sexually reproduction is there, then we need well-defined reproductive system. Can the change in a child be to become an adult is called the metamorphosis? नहीं. Can the जो हमारा metamorphosis है, हमने यहाँ पे नाम दे रखा है adolescence. Transition period from the childhood to the adulthood is known as a, क्या था हमारा? adolescence था ना? द ट्रांजेक्शन पीरियड और प्यूबर्टी पीरियड था ना जो हमारा। तो हम मेटामॉर्फोसिस में क्या है, कुछ रिमूव हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस जनरली हम कंसीडर करते हैं फ्रॉग्स के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद है बडिंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, एक्सप्लेन व्हाई इट इज एन एडवांटेजेस एंड व्हाई इट इज डिसएडवांटेज। देखो बडिंग जो है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगी ड्यू टू द
asexual reproduction. Reproduction is simple, needs only single parents, and fastest mode of reproduction is required. So yeast is used in as a commercial product, or we can say in the commercial fields we can use. कमर्शियल पर्पज जैसे हमें कर्ड फॉर्मेशन करनी है, वाइन बनानी है, अल्कोहल बनाना है, तो वहाँ पे हम इसको को यूज़ कर सकते हैं. ये तो इसका एडवांटेज हो गया. और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? समटाइम्स मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन इज बिकम्स मोर, सो वी हैव टू किल इट. जैसे ब्रेड बन गई आपकी, तो एट द सर्टेन लिमिट वी नीड इट फॉर द रिप्रोडक्शन इसका. तो इसकी स्पॉन्जी हो जाएगी ब्रेड हमारा, और उसके बाद अगर ये किल नहीं हुआ तो ये तो अपना काम करता रहेगा, रिप्रोडक्शन का काम चलता रहेगा. सो इट नीड्स इन अ लिमिटेड वे. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम लोअर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस asexual. गिव रीजन. लोअर ऑर्गेनिजम्स मीन्स विच हैव सिंपल लाइफ स्पैन and single we can say cells, so they are known as a lower organisms. So lower organisms needs reproduce asexually because they do not have well defined reproductive system or reproductive organs or reproductive cells. So lower organisms have the simple lifespan, they do not have well defined reproductive system, reproductive cells or reproductive organs. So lower organisms reproduces asexually, they require only single parent, because in the sexual reproduction they required two parents. Okay. अब आ जाइए एनालाइज पे. एनालाइज, अब आपने दिमाग लगाना और फटाफट आंसर भेजने मुझे. ऑब्जर्व, ये जो एग पड़े हैं, दीज एग्स इन द ट्रेस गिवन ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आपने बताना है मुझे. आर द एग्स वी गेट इन स्टोर्स फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड? ये एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड हैं या अनफर्टिलाइज्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू ऑब्टेन? जीवांशी अनफर्टिलाइज्ड. अब है, आपने आंसर, सभी ने आंसर देना है कि कैसे पता चलेगा आपको. हाउ कैन यू ऑब्टेन फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स? कैसे ऑब्टेन करेंगे फर्टिलाइज्ड को और अनफर्टिलाइज्ड को? अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है. फिर हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? फ्रॉम वेयर वी विल ऑब्टेन द फर्टिलाइज्ड एग और फ्रॉम वेयर वी विल गेट द अनफर्टिलाइज्ड एग. उसके बाद क्वेश्चन है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड? इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज में कोई डिफरेंस आएगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या नहीं होगा? इज देयर एनी चेंज? कोई चेंज नहीं है. 3 क्वेश्चंस हैं, एक का आप आंसर बता रहे हो कि दीज एग्स आर अनफर्टिलाइज्ड. अब आप उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ वी विल ऑब्टेन द फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड. तो स्टोर्स से आपको फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज्ड मिल जाएंगे, ठीक है ना. और उसके बाद जब यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कैसा है इसका? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है? आउटसाइड द बॉडी होगा ना, तो ये कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इसका. So we can get, after the external fertilization we can get in the poultry farms, from we can get the poultry farms. और अब है, is there any difference in the nutritional value? Fertilized eggs are obtained when met with the roasted produced egg, and unfertilized eggs are the paint. तो फर्टिलाइजेशन तो देखो क्या है, वेन एवर द बेबी विल फॉर्म, तो उससे पहले क्या होगा? एग विल बी फर्टिलाइज्ड. और वो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा ना, तो वो क्या है आपका? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा. और अब क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज में क्या चेंजेस आ जाएंगे जब आपका फर्टिलाइज्ड एग है और अनफर्टिलाइज्ड एग है. तो व्हाट विल बी द न्यूट्रिशनल वैल्यूज चेंजेस? यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज में चेंजेस आएंगे. गिव मी आंसर. Yes, there will be almost no changes.
इसके बाद देखिए ट्विंस इन फिगर 10.18 ट्विंस गिवन। हैव यू एवर सीन द ट्विंस? ट्विंस का मतलब है जुड़वा, एक जैसे बच्चे। तो आपने कभी देखे हैं? हैव यू सीन एवर ट्विंस? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड? दो एक जैसे ट्विंस कैसे फॉर्म होंगे? एंड फाइंड आउट द आइडेंटिकल ट्विंस आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स। सेम सेक्स का मतलब है कि जो ट्विंस हैं तो क्या सिर्फ दोनों गर्ल्स हैं, क्या दोनों बॉयज हैं, या दोनों एक लड़का एक लड़की हैं? तो क्वेश्चन क्या है था, फाइंड आउट व्हाई आइडेंटिकल ट्विंस आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स। मोस्टली सेम सेक्स होते हैं, मोस्टली यानी मोस्टली ट्विंस या तो दोनों गर्ल्स हैं या दोनों बॉय। बहुत कम रेयर के केसेस में इसका उल्टा हो सकता है, अदरवाइज मोस्टली ट्विंस जो आपके क्या हैं, टू बॉयज टू गर्ल्स विद द सेम सेक्स। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे क्या आपने ट्विंस देखे हैं और वाई दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्यों है, और